जा भाई तू सामने से। Staying on the story from Delhi's Shaheen Bagh, where the MCD is carrying out a demolition drive essentially to break down illegal structures and constructions, including shops. The people living in this area have said, again the allegation is that no prior notice was given, but the MCD had indicated earlier that on the 9th of May, a demolition drive is going to be carried out in Shaheen Bagh, and this is going to continue till the 13th of May. This is also going to include the Jasola Vihar area and the Jasola Nale area. Anticipating a possible problem in law and order situation in Delhi city right now, you see the police bandobast on your screen right now. Meanwhile, Congress workers are with the ground, as you can see in these pictures, protesting against the MCD, saying that illegal encroachment should be removed in other areas as well. Take a look at this ground report. नोट होगा, ये सामने हुजूम देखिए, लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है चारों तरफ। ये चारों तरफ शाहीन बाग में जो लोग इसके खिलाफ हैं, अवैध निर्माण को बुलडोजर अगर गिराने आया है उसके खिलाफ जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जिस फोर्स का इंतजार है उसके लिए थोड़ी देर मुझे लगता है और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस तरह की तैनाती नहीं दिख रही है। एक बार फिर से शाहीन बाग का ये पूरा इलाका आपको दिखाते हैं, घरों के बाहर छतों पर जवान है जो देखिए, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिख रहे हो, Shaheen Bagh in Delhi city, the epicenter of the Anti-Citizenship Amendment Act. Today in news again for the MCD, which has rolled in bulldozers here to break down the illegal structures and encroachments here. One of the leader, it has The people living in this area say, again, that prior warning was not given. They've also gone on to say that you can, in fact, do away with the encroachments. There is no need to bring in bulldozers. This is giving Shaheen Bagh a bad name, is what some of the residents told India Today and Aaj Tak. Congress workers are with the streets as well, protesting against the encroachment drive, saying that these areas should not be targeted and that there are illegal encroachments to the tune of thousands in the national capital, and that the rich also must be brought to justice when it comes to the illegal structures and encroachments that they put up. पूरी तैयारी के साथ है। ये देखिए, जो बकायदा स्मोक गन होती है, टीयर गैस की शेल, वो टीयर गैस की शेल के साथ यहाँ पर धीरे धीरे करके जो फोर्स है वो बस में भरकर यहाँ पर पहुंची है। सीआरपीएफ के जवान हैं, इसके अलावा भारी फोर्स की तैनाती यहाँ पर अब आ चुकी है। जिस फोर्स की कमी की वजह से सगुन जरा आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जिस फोर्स की कमी की वजह से बुलडोजर जो यहाँ पर आया हुआ था रुका हुआ था, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, तमाम जो फोर्स है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँच गई है। यानी जो डेमोलेशन का कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, जो शुरू होना था, अब से कुछ देर बाद जो रुका हुआ था वो बहुत मुमकिन है कि वो शुरू हो जाए। और ये देखिए, दिल्ली की पुलिस की जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो एक एक करके यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो फोर्स है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बाकायदा अब तैयारी यहाँ पर शुरू होगी। के सामने जो लोग मौजूद थे वो महिला को भी दिखाइए, वो दाईं तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये महिला आकर इस पर चढ़ गई हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं। पुलिस यहाँ पर लोगों को अब हटाने का काम कर रही है, क्योंकि बुलडोजर के आगे खड़े हो गए थे वो हट नहीं रहे थे। अब दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें हटा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं और उनको हटाने में दिल्ली पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर लोग इकट्ठा। बताइए, 15 साल का इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। एमसीडी 15 साल से कहाँ से हो रही थी? 18 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। लोगों को यहाँ से हिरासत में जो
लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, बुलडोजर के आगे लेट रहे थे। अब पुलिस बल जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद जो बुलडोजर पर आप देखिए कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। अगर कहा जाए तो शुरू हो रही है। अब लगातार यहाँ पर पुलिस बल जो है जिसकी लगातार ये बात चल रही थी कि वो उनको दिया जाए इस इलाके में, अब उनको मिल चुका है। उस पर कार्रवाई के आगे दिल्ली पुलिस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। Kumar Kunal continues to be with us. Kumar, take us through the details of the kind of police bandobast, the presence that has been visibly beefed up in this area, given that there could be a possible breakdown of law and order. The people are protesting, residents are out on streets, in spite of the fact that warnings have been given by the MCD in the past as well, isn't it? Yeah, the warning was given much in advance to the encroachers who are in the area. I can show you, Pooja is also with me. I can show you that how the police bandobast can be seen all around the Shaheen Bagh. Pooja will also explain that what's the situation here, right? That's right, because Kunal has been reporting since morning. But Prem, see here, I want viewers to take a look. This is how the set up now. Bulldozers are not moving because there is already outrage. There are a lot of people who are creating and trying to stop this drive. They have been complaining against it. But this is right now just one bulldozer that I see here. Prem, let's take a look and also turn around the camera and show to our viewers what the scenario looks like right now. Prem will show you. Take a look. These are additional forces that have been sent by the Delhi Police, and of course the CAPF is also on guard. And right now they want to ensure that it is peacefully done. It's an anti-encroachment drive, Kunal. This anti-encroachment drive was supposed to happen few days ago. Yeah. But today it's happening. What took the delay? There are a series of anti-encroachment drive in South MCD, and Shaheen Bagh, actually this is the date, 9th was the date which was given for anti-encroachment drive at Shaheen Bagh. And what I have been told by the locals, the local shopkeepers, that mostly there was encroachment on the footpath, and mostly the kind of encroachment which was here by the local shopkeepers, but that has been removed. Now I can show you that all these areas where some of the shops which is known as Rehri Patriwalas, they have been removed from the sidelines, but still what people are saying that these shops, these the big, these shops, actually these are footpaths where these big showrooms are being and they put their stalls sometimes outside as well. And many of the shops and so these big stores are not the problem. The showrooms are not the problem. These are factory outlets. Let me tell you and help you understand the location. Why? When we think of Shaheen Bagh, we think of the anti-CAA protests that had taken place about a year ago. So of course that brings back the memory. But this location is primarily important because this is in line of the Delhi-Noida border. Delhi-Uttar Pradesh border is how it's connected. These are factory outlets, hundreds of them here. Hundreds of these stores here. But what we are told, as Kunal is also telling us, these showrooms and stores are not the problem. बहुत कुछ कहता है. अब ये बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पैमाने को तैयार नहीं है. यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. ये तस्वीरें दिखा रहे हैं. पुलिस यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, और ये महिलाएं हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये क्रेन और उसका मूवमेंट तभी मुमकिन हो पाएगा जब महिलाओं को हटाया जाएगा. एक सेकंड जल्दी से दिखाइए. ये देखिए, एक महिला को उतारा गया. ये महिला है जो शुरू से टिकी हुई इस पर अटकी हुई है और वो हटने को तैयार नहीं है. अब उनको जबरन हटाया गया. सभी लोगों को हटाया गया है. सब लोगों को हटाया गया और इन महिलाओं को यहाँ से हटाया जा रहा है. अब देखिए, ये बुलडोजर का ये वाला हिस्सा दिखाइए. आप इसे उठा दे रहे हैं ताकि इस पर कोई फिर से चढ़ नहीं पाए, और ये बुलडोजर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. शाहीन बाग में अतिक्रमण को ढाने के, अवैध अतिक्रमण को ढाने का काम शुरू हो चुका है. बुलडोजर आगे बढ़ चुका है. जो विरोध था उसे हटा दिया गया है. विरोध के बीच में जो तमाम महिलाएं थी उन्हें हटाया गया पहले, और उसके बाद ये बुलडोजर को आगे लेकर तमाम लोग जा रहे हैं.
और ये महिला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर आइए, इधर आइए। ये महिलाएं जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, ये देखिए, उन्हें अभी भी हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये महिलाएं जो आगे में उसके सामने हैं, उनको हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ नारे लगते हुए यहाँ पर फिलहाल ये बुलडोजर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब जितने भी लोग आसपास हैं उन सबको इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुलडोजर में जो डिगिंग पार्ट है वो ऊपर हो चुका है और जो उसका लक्ष्य है उसकी तरफ बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। तो इधर से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बुलडोजर के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जो तमाम महिलाएं थी उनको महिला सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से हटाया और डिगिंग पार्ट को अब ऊपर उठा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब ये बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ भी अवैध अतिक्रमण होगा उसे हटाने के काम की शुरुआत हो चुकी है। औपचारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल आने के बाद जो विरोध शाहीन बाग में देखा गया था, खास तौर पर महिलाएं जाकर उस बुलडोजर के आगे बैठ गई थी, उन सबको हटाने में कामयाबी मिली है और बुलडोजर अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। याद रखिए ये ट्रैफिक वाला रोड है। एक बार इसी के साथ जरा पूरा इलाके की भीड़ दिखा दीजिए। पूरे इलाके की भीड़ हम आपको दिखाना है। गौतम जाना है इसके साथ में यार, बाइकें बैठे भी हो रही है फिर भाई। Citizens are asking these questions about why encroachments can't be removed without bulldozers. Why make a scene about this? Giving Shaheen Bagh a bad name is what one of the residents told India Today. These are pictures coming in from Shaheen Bagh, where the police bandobast, the presence has been beefed up, anticipating a problem there. Residents blocking bulldozers. The bulldozers have been rolled in to remove illegal structures. It was done in Delhi's Jahangirpuri 3 weeks ago. As per the plan, महिला थी जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, उन्हें बस में बिठा लिया गया है। जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी थे उन सबको हटाया गया है, बस से उन्हें ले जाया जा रहा है और फिर ये बुलडोजर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये दिल्ली पुलिस की ही बस है। जितनी महिलाएं थी जो विरोध में थी उन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि वही जाकर क्रेन का जो लिफ्टिंग पार्ट होता है उस पर जाकर बैठ गई थी, उसके हैंड पर, और फिर और ये आप देख रहे हैं जितनी महिलाओं का विरोध था उन सबको दिल्ली पुलिस ने बस में बिठा लिया है और अब बस से 1-2 महिलाएं और बची हुई थी, उन सबको लेकर दिल्ली पुलिस यहां से निकल रही है। उन्हें हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो बुलडोजर जो विरोध कर रहे थे उन्हें हटाया गया है और जो बुलडोजर इधर सामने है ये निकल रही हैं। दिखाइए, अब इधर बुलडोजर दिखाइए। बुलडोजर अब अपने काम पर लग जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, भारी सुरक्षा के इंतजाम अब धीरे धीरे यहाँ पर किए जा रहे हैं। शुरू में जो असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शुरू में सिपाही नहीं दिए थे, उसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर वो परिस्थिति साफ हो चुकी है। भारी तादाद में यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं और ये महिलाएं वहाँ पर जितने भी पुरुष थे या अन्य लोग थे जो विरोध में थे उनको हटाने में वहाँ से कामयाब हुए हैं। तो जैसे जैसे ये बुलडोजर आगे बढ़ेगा कार्रवाई की शुरुआत होगी और हम सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर आज तक पर दिखा रहे हैं। ये हाँ, well, there was my colleague Anjana Kashyap getting us an overview of the situation from Shaheen Bagh in South Delhi, connecting with Uttar Pradesh, where legal encroachments have been set up, and the South Delhi MCD had indicated that there is going to be a drive of this nature on the 9th of May, and that is what is happening. This is going to extend up to Jasola Vihar in the vicinity, which is connected to Shaheen Bagh, and the drive is going to be completed on the 13th of May is what the South Delhi Municipal Corporation has said. Congress workers have hit the street saying that they're not going to be allowing the bulldozers to roll in and then bring down the illegal structures. Kumar Kunal has more on that. Pooja Shali also continues to be with him. Kumar, what's the very latest? Has the drive started effectively or are the residents still blocking it? I can show you the live pictures from Shaheen Bagh. The bulldozer is moving, but quite slowly. It has not started the anti-encroachment drive as of now. The heavy police deployment, you can see here
just in and around the Bulldozer. It's a main road connecting Delhi to Noida as well. So there is a heavy traffic jam on the road as well. But now I can show you the most crucial part of this drive. This Bulldozer, this has started moving. Where it will stop, where it will remove the encroachment. All the showrooms I can show you, which is here alongside this road. People are standing in anticipation that from where this anti-encroachment drive will start. But now, earlier the protesters have stopped this Bulldozer, but now it has started moving and it is going towards the Kalindi Kunj side. But now all the eyes will be on the police force as well as the Bulldozer, that where it is going to stop. So this is the situation at the Kalindi Kunj side right now. The heavy police deployment. The Bulldozer is being cordoned off by the police, paramilitary forces as well as Delhi Police Jawans. They are all moving along with this Bulldozer. So quite a few protesters have gathered. They tried to stop the Bulldozer, but still now those protesters have been removed forcefully by the police personnel. It is moving. So the Bulldozer is slowly but definitely is going to remove the structure which are illegal, which are termed as encroachment. So I will let you know that what actually this encroachment is being made. There are two kinds of drive. One is which is illegal construction, that is demolition drive, and the second one is anti-encroachment drive. The anti-encroachment drive is normally being done at a place where the public place is being occupied by illegal traders, illegal shop owners, or even residents. So this drive is going to start. But right now it is not clear that from where the whole drive will start. I can show you the Bulldozer is moving quite fast and moving towards Kalindi Kunj, but it has not stopped here. So which will be the first target, that has to be seen. But I can show you that how police deployment has been increased. Earlier, police has denied any kind of police protection to the South Delhi Municipal Corporation officials who are coming for the official anti-encroachment drive. So it was not clear earlier that will this drive start or not. But now, as the police protection has been provided to the South Delhi anti-encroachment removal squad, so it is now almost certain that the encroachment drive, anti-encroachment drive will take place. But this has moved quite away from Shaheen Bagh. The Bulldozer on past from Shaheen Bagh now. So now it is definitely a big question that will the drive take place. News coming in from Shaheen Bagh, where residents are out on the streets. Delhi Police has provided help to the MCD vis-a-vis increasing the police presence and the bandobast there. Congress workers also have hit the street saying that they're not going to be allowing the bulldozers to roll in. The demolition drive is going to extend up to Jasola Vihar, has been indicated by the South Delhi Municipal Corporation in the past as well. These are pictures coming in of chaos from Delhi's Shaheen Bagh, which is of course just next to Noida. It shares its border essentially. Jasola Vihar is in the vicinity, and the MCD has said that illegal encroachments will be removed using bulldozers in this area. This matter is also pending the Supreme Court of India. Now the Congress has hit the streets saying that this is a drive that is being carried out because there is vendetta against a particular community. Residents of this area have in fact gone on to say that there are illegal encroachments, but rolling in bulldozers is just to bring this area, this locality, a bad name. There are different ways of doing away with illegal encroachments, is what residents in this area have said, but these bulldozers have been rolled in.
The MCD says it is a part of the demolition drive that is being carried out in various parts of Delhi city, and of course Jasola Vihar next to Shaheen Bagh is next. Shaheen Bagh, remember, was in news 2 years ago for the Anti-Citizenship Amendment Act protests that were carried out in this locality. Meanwhile, the Delhi police is also ready to use tear gas shells on residents. Many of them have been detained, and the Congress workers have also been detained there. All of those people objecting to the drive being carried out are being detained is what we know. Anjana Kashyap has more on that. बुलडोजर की भी तैनाती हो गई है। इधर का इलाका दिखाते हैं, देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं अतिक्रमण में, क्या इस घर पर, यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं उनको स्टिल्स के साथ होल्ड करके रखा गया है। क्या इस अवैध निर्माण पर चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी परिस्थिति साफ नहीं हो रही है कि बुलडोजर कहां पर चलेगा। आप देखिए बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये समझ Shaheen Bagh, the MCD has said they're doing their job and that they're going to continue to roll in these bulldozers in whichever areas where there are illegal encroachments, including Jasola Vihar 3 weeks ago. We have the Congress, in fact, hitting the ground. Also, we have an MLA of the Aam Aadmi Party, Amanatullah Khan, who is in fact currently in Shaheen Bagh. We just put out his pictures for our viewers. There is evidently chaos, confusion on the ground, as the police is all set to use even tear gas shells against residents who are preventing the bulldozers from removing these illegal encroachments. These are visuals of residents blocking the bulldozers. Congress workers are there as well. Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan is in fact at Shaheen Bagh right now. He represents Okhla, and which Shaheen Bagh falls in this particular constituency, and so does Jasola Vihar, which is next to Shaheen Bagh, where the next demolition drive is expected, is what the MCD has said. All of this as per the rules after giving prior warning is what the MCD says. Why roll in the bulldozers when illegal encroachments can be removed without the bulldozers is the question residents are asking. Is there a deliberate attempt to bring a bad name to Shaheen Bagh is what some of the residents asked. Residents are out on the streets right now preventing the bulldozers from being rolled in. However, the demolition drive as per the plan has started. Remember, this has become a big flashpoint with many claiming and asking why bulldozers were not rolled out in the previous years. Why is it being done right now? Has the BJP sensed a political opportunity? And this is the question that the opposition, particularly the Congress and the CPIM, the left, who have opposed this in court as well, are asking. Bulldozers were rolled in previously in Delhi's Jahangirpuri as well. Now it is in Delhi's Shaheen Bagh. Next is Jasola Vihar. The MCD has come out and said it's also going to be there in Sangam Vihar and New Friends Colony. All of this in the same area. What is going to be the eventual fallout of these bulldozers being rolled into these areas, mostly dominated by the minority community, is the question many are asking. Is this to send out a message? Is this muscle flexing by the BJP, which controls the MCD in Delhi?
Pictures of the demolition drive. अगर यहाँ पे कॉलोनी के अंदर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए, लेकिन अभी उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। अब ये मंशा क्या है बुलडोजर लाने की? आप कांग्रेस पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, काउंसलर हूँ, यहीं से मेरा एरिया है ये। मैंने 50 बार लेटर दिया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, लेकिन इंक्रोचमेंट हर वीकली प्रोग्राम होता है एमसीडी का। इंक्रोचमेंट का दस्ता अलग होता है हर वार्ड के अंदर, उसका एक पूरे महीने की लिस्ट होती है कि कब इंक्रोचमेंट। अमानत जी क्या बोलेंगे इसके बारे में? किसके? ये जो बुलडोजर शाहीन बाग में चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है, देखता हूँ ना अभी कहाँ चल रहा है। बोल रहे हैं एमसीडी के लोग। हाँ मैं आया हूँ ना, उनसे पूछने आया हूँ कहाँ पर है। आइए आप सब लोग आइए। देखिए अमानतुल्लाह खान जो इलाके के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अमानत जी क्या? अरे अमानतुल्लाह लाइव है हमारे साथ, आइए। लेकिन अभी तो चुनौती होगी इन सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि बुलडोजर को आगे हटाना है यहाँ से। जी Amanatullah Khan, the MLA of the area, has spoken to India Today as well as Aaj Tak, talking about the fact that an attempt is being made to disturb the law and order situation of the national capital. Congress has hit the streets as well, asking why similar demolition drives are not carried out at different other colonies where there are illegal encroachments by the rich as well. Why are the poor being targeted is the question that Congress is asking, not talking about minorities, interestingly, but these are areas dominated by minorities, religious minorities in the national capital. We've seen this drive in Jahangirpuri. Now we're seeing it in Shaheen Bagh. Next is Jasola, Bihar, right in the vicinity, is what we know. The MCD says this is not illegal. A prior warning had been given in the past as well. Many of these people have been asked to produce papers. The residents say that there are illegal encroachments. There are encroachments and that this has been dealt with in the past as well without the bulldozers being rolled in. Why are the bulldozers being rolled in is the question that residents are asking. Is it to give a bad name to this particular locality which was in news 2 years ago? It had become the epicenter of the Anti-Citizenship Amendment Act protest. That's the question that the residents there are asking. Meanwhile, the police presence has been beefed up in this area. Delhi Police is supporting the MCD to bring the law and order situation under control and to see if things go out of hand, because residents are out on streets and are protesting, are stopping the bulldozers there. The Delhi Police is ready with tear gas shells as well, as we put out those pictures for our viewers. But a great deal of chaos and confusion right now in Delhi's Shaheen Bagh area. हट जाइए, ये कैमरा है। ये अमनातुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। सर, अब ये तो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस से कार्रवाई कर रहे हैं, अनेकों कॉलोनियों में कर रहे हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड। मैं 3 दिन पहले आया था, मैंने खुद आह्वान किया लोगों से, लोगों ने इंक्रोचमेंट को हटा लिया। अब ये मुझे बता दें इंक्रोचमेंट है कहाँ? अगर इंक्रोचमेंट है मैं खुद तुड़वा लूंगा, मैंने खुद तुड़वाया है। एक मस्जिद के आगे वुजू खाना था, 2 टॉयलेट थे, अपनी जेसीबी 2 दिन चलाकर खुद तुड़वाया है। इस रोड पर मुझे बता दो यहाँ इंक्रोचमेंट है। इसका तो इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि जोनल ऑफिसर आके चिन्हित करेगा। वो जब आए थे, जोनल ऑफिसर आया था, मैंने सारा हटवा दिया था। जो उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था हमने खुद हटवा दिया था। यहाँ का SHO भी जानता है, DCP भी। बताइए शाहीन बाग में इस तरह का विरोध क्यों? आखिर सरकारी लोग, एक सेकंड सर, आपको भी पता होगा, आप चुने हुए विधायक हैं, सरकारी काम में दखल अंदाजी कानून के खिलाफ है। देखिए एक बात सुनिए, ये PWD का रोड है, अगर ये गलत करेंगे तो लोग तो आएंगे ना। मुझे मेरे से बात करें MCD के लोग, यहाँ लोकल पुलिस भी है, आए वो मुझसे बात करे, मुझे बताए ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद तोड़वा लूंगा। बुलडोजर बिना अवैध जगह देके थोड़ी ना चलेगा। आगे आगे ये बुलडोजर बढ़ रहा है, ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो उसके विरोध में फिर से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ये आपने देखा अमानतुल्लाह खान को, जो कि विधायक है, वो आए हुए प्रोटेस्ट करने में, और उनका कहना है कि हमने गिराए हैं, पहले हमें पेपर्स दिखाइए। कागज जो नहीं दिखाने की बात करते थे, आज वो कागज मांग रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये बुलडोजर है और यहाँ पर चिन्हित की गई हुई जगह पर ही वो चलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो MCD के भी अधिकारी हैं वो साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही जहांगीरपुरी में भी हुआ था।
बताया नहीं जा रहा था कि कहां पर चलेगा, उसके बाद अचानक हुआ था। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। ये दिखाइए एक बार, महिलाएं भारी तादाद में यहां पर बुलाई गई हैं क्योंकि महिलाओं का प्रोटेस्ट काफी देखने को मिलता है शाहीन बाग में, और इसीलिए एक तरफ ये पुलिस की गाड़ी है, दूसरी तरफ ये बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, आप इधर से आ जाइए तो आप दिखा पाएंगे। बिल्कुल बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कौन से घर पर, कौन से कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ की तस्वीर अब यही है कि बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कार्रवाई जिस घर पर होनी है, जिस दुकान पर होनी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दुकानें शुरू हो जाएगी।